Part of the video continued from exercise, some few questions of exercise 5.5. We have done three questions root under. Here I am going to take one more questions as it is given, and that x cos x to the power. I think we have to take another question. X to the power x plus y to the power x. X to the power y plus y to the power x is equal to 1, and we have to find dy by dx. Now, here again the question is divided into two parts, two terms, x to the power y and y to the power x. So we have to first let x to the power y as u and y to the power x as some another function v. So what is, if you are going to take log, तो log of u is nothing but y power जो है इधर आ जाएगा log x. Again I am saying that log is natural log and differentiate it with respect to x. So 1 by u, log u is 1 by u, but u is other than x, so du by dx as chain rule, and then ddx of y log x. Product rule, y ddx of log x, you know ddx of log x is 1 by x, log x ddx of y. So what we have, du by dx is u into y, ddx of log x is 1 by x, so y by x, plus log x, and ddx of y is nothing but dy by dx. So we have du by dx is u is what, x to the power y by x plus log x dy by dx. Okay, this is 1, and take another yx as v equal to yx. So here taking log v equal to x into log y, जो पावर है वो इधर आ गया, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, and then differentiate it with respect to as we have done it. So 1 by v dv by dx. Product rule, x को छोड़ा ddx of log y, and then log y को छोड़ा ddx of x. So what is dv by dx? It is v transpose किया x log y का 1 by y and y का dy by dx plus log y and x का 1. Clear? So dv by dx is y to the power x by y divided by dx plus log y. Okay, this is second equation. We have to find ddx. From here we have to find dy by dx. From here we have to find dy by dx. So now we come to the question. What is the question? The ddx of x to the power y plus y to the power x is equal to ddx of 1. This is u actually. So du by dx plus dv by dx is nothing but 0. Du by dx plus dv by dx is nothing but 0. And now you just put dy by dx from here, dv by dx from here. What you get? You are going to get so du by dx is x to the power y by x plus log x dy by dx, and plus dv by dx is what? कहाँ था dv by dx? This is dv by dx, y to the power x by y dy by dx plus log y equal to ddx of 1, that is 0.
इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, यहाँ से हमें डिवाइड बाई डी एक्स निकालनी है, ठीक है ना। You will find there are 4 terms, including on the right hand side we have now 5 terms, but on right hand side it is 0. So actually you have 4 terms. We are going to get 4 terms. Keep divide by dx on left hand side, as I am going to write down xy log x divide by dx. Bring from here minus, sorry ये तो इधर ही है, plus y to the power x by y divided by dx is equal to minus x to the power y into y by x. इन दोनों को इंटू करके ट्रांसपोज किया, फिर माइनस y to the power x log y हो गया. So what we have, dy by dx, x to the power y log x प्लस इसको आप लिख सकते हो y नीचे y पर, y टू द पावर x माइनस 1 बेस कर दिया इंटू x इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आया, x टू द पावर y माइनस 1, x का पावर y बाई x इज x का पावर y माइनस 1 इंटू y एंड माइन प्लस y टू द पावर x log y. Okay, so what is divided by dx? Divided by dx is minus x to the power y minus 1 into y, or you can say write down y here, plus y to the power x log y and the whole divided by x to the power y log x plus y to the power x minus 1 into x, and this is the answer. Is it? So this is the today's first question from exercise 5.5. Okay, again take one more questions from example number 33. Find divided by dx. It is given that y to the power x plus x to the power y plus x to the power x is equal to a to the power b. Now here from here you can use previous property, but again since I have no this one, so I am again going to find dy by dx. So write down here ddx of y to the power x, x to the power y, x to the power x is equal to ddx of a to the power b. Now here that means ddx of, I am just going to sorting it out by taking, you will take the differentiation of y to the power x, differentiation of x to the power y, and differentiation of x to the power x from previous, just these two in today's and this from previous video. What is the ddx of these? You just tell me. A to the power b. Now here I am going to find out what is the ddx of y to the power x. ddx of y to the power x is, I think I have written as y to the power x by y divided by dx and plus log y. यही था शायद, ये पावर हो गया, हाँ ठीक है. एंड ddx ऑफ एक्स वाई था, अगेन ये बाहर में x का पावर y होगा, फिर यहाँ y बाई एक्स होगा और log x के साथ dy बाई dx होगा, ठीक. एंड देन x टू द पावर x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो x टू द पावर x होगा और 1 प्लस लॉग x होगा, 1 प्लस लॉग x होगा या log x प्लस 1 होगा. अगेन हमने आपसे पूछा था कि इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया. अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, b log a लगा देते, नहीं, a to the power b is constant, so the differentiation of is nothing but 0. Is it? Now here we have 1, 2, 3, 4, 6 terms, out of which in 2 terms is dy by dx. So dy by dx from here y to the power x minus 1 into x, and from here x to the power y log x dy by dx, and the rest part is negative as minus y to the power x log y plus x to the power y minus 1 y, ये प्लस मतलब माइनस चूँकि हमने कर दिया तो ब्रैकेट हो गया,
एंड ये पूरी चीज गई x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x। दूसरी तरफ तो इस पूरे को हम एक साथ ला सकते हैं, कैसे? माइनस प्लस एंड this one, and then what is divided by dx? You can simply write down what is divided by dx, the whole divided by this one. You will get the answer. I hope you can find it. The answer is here, yes, minus y to the power x log y plus y into x to the power y minus 1 plus x to the power x into 1 plus log y divided by this one. So that is the answer. So this I have done for you. Now coming to the next question, I am again going to take some question from exercise. So in the next question I am going to take x cos y to the power x plus cos x to the power y equal to cos y to the power x. The question number 14. From here we have to require divided by dx. Now this is equality and both side function to the power function. So take logarithm. Take log on both sides. तो इधर log अगर लोगे तो y log cos x हो जाएगा, इधर log लोगे x log cos y, and then differentiate with respect to x. Now you can directly go for the differentiation, leave it y and then ddx of log cos x, product rule on the left hand side, plus log cos x and ddx of y, so divide by dx, is equal to x ddx of log cos y and plus log cos y ddx of x. Okay, so what we have, y log cos x, log x ka 1 by x, so log cos x 1 by cos x, and cos x is other than x, so ddx of cos x, chain rule, plus log of cos x into divided by dx is equal to x log of cos y is 1 by cos y and ddx of cos y plus log of cos y and ddx of x is nothing but 1. Okay, now what we have on the left hand side, ddx of cos x is minus sin x, so y minus sin x by cos x plus log cos x divided by dx is equal to cos y again minus sin y, so here minus x sin y by cos y and plus log cos y. And what is cos y? It is other than y, other than x, so cos y ka minus sin y and then dy by dx, then what? Dy by dx. Okay, so this we have the last line, minus y sin x by cos x plus log cos x divided by dx equal to minus x sin y cos y, sin y ka divided by dx plus log of cos y. Now here again we have divided by dx at two different places and rest are without divided by dx. Okay, so keep divided by dx on the left hand side. So divide by dx log cos y, divide by dx is here minus है, so plus x sin y by cos y tan y, you can write tan y divide by dx is equal to log cos y on the right hand side and this is minus, plus कीजिए
y. Sin x by cos x is tan x. So what is dy by dx? Dy by dx is log cos y plus y tan x divided by log, oh sorry, it is again cos y, log cos x. I think a common log cos x. Yes, it is log cos x. So log cos x plus x tan y, and this is the answer of the question number 14. Is it? Now there is another questions. Find the question was 16. I am going to 15. Just a summary. 15. xy e to the power x minus y. Take log. I can say log of xy is log of e to the power x minus y. So what we get? Log x plus log y, and log of e to the power x is nothing but x minus y. And then differentiate. So 1 by x log y, 1 by y divided by dx, x का 1 y का डिवाइड बाई dx. डिवाइड बाई dx वाले टर्म को एक तरफ लाइए, 1 by y प्लस 1 डिवाइड बाई dx और 1 minus 1 by x. Is it or not? Then what we have? You can find dy by dx as 1 minus 1 by x, 1 by y plus 1. So it is x minus 1 by x, 1 plus y by y. So y by x, x minus 1, y plus 1 is the differentiation of the given. Question number 15. Clear? यहाँ दोनों तरफ हमने log y ले लिया. Into था product rule, log of x y is log x plus log y, and log of e to the base x, log of e to the power x minus 1 पावर था तो x minus 1 इधर, log e क्या हो गया? log e 1 हो जाता है, तो x minus y. Is it? आप यहाँ लिख सकते हो x minus y log e का मतलब 1. देन log x का डिफ्रेंशिएशन 1 by x, log y का डिफ्रेंशिएशन 1 by y डिवाइड बाई dx. हम जिस वेरिएबल से डिफ्रेंशिएट करते हैं उसके अलावा अगर कोई दूसरा वेरिएबल है तो उसके साथ उस वेरिएबल का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x लगा होता है. x का 1 y का डिवाइड बाई dx. सो हमारे पास दो डिवाइड बाई dx हैं, उनको एक तरफ लाया, 1 by y एंड प्लस 1 डिवाइड बाई dx. 1 और बिना डिवाइड बाई dx वाले को 1 और माइनस 1 by x को एक तरफ. You will find the differentiation. You can take one more questions. This is some different type of questions I am going to discuss. Actually the question is that differentiate a product in 3 ways: by using product rule, by expanding the product and then find the, and by using logarithmic. And do you find that differentiation is same in all the cases? Question is that x square minus 5x plus 8, x cube plus 7x plus 9 in 3 different ways. Is it? Okay. You can simply find product rule. ddx अगर हमने लगाया यहाँ पर तो क्या हुआ? प्रोडक्ट रूल. क्वेश्चन नहीं देख पाया आप ना. ये दो पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब, दिस इज क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9. You are required to find its derivative in 3 different ways. One by product rule, as leave the first function as it is and then differentiate the second function. Okay, and then again plus leave the second function as it is and differentiate the first one, x square minus 5x plus 8. Okay, so x square minus 5x plus 8, this is 3x square, x cube का 3x square और 7x का 7, 9 का 0, x cube plus 7x plus 9 and x square 2x minus 5, 5x का 5 and 8 का 0.
दिस वन। अब इसको आप एक्सपैंड करने से पहले आप इसको ऐसे ही छोड़ो अभी फिलहाल। जो सेकेंड मेथड, फर्स्ट यू हैव टू एक्सपैंड इट, लाइक एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब x5 प्लस 7x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 5x4 माइनस 35x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 8x क्यूब प्लस 56x plus 72. If you are going to simplify it, this is x cube, so 15x cube, x square, it is minus 26x square. Okay, then these two plus 11x and plus 72. Now this is the function which you have to differentiate. So what is its differentiation? Let it be y. Then what is dy by dx? It is 5x4 minus 20x cube plus 45x cube x square minus 52x plus 11. You know, this is the. Now do you think from here we can get 11? They go minus 45 and this is plus 56. I'm going to get 11. Okay, सब ठीक है. This is 3x square and x square, 4x 3x 4 तो है, 3x to the power 4 है, but in this question 5x4, x4 और भी है, हाँ यहाँ से 2x4, तो 5x4 भी मिल रहा है. If you simplify you will get this one. I say you can get it. And the third process, let it be 2, let it be y, and then take log. And after getting it log, just try to get it. ये तो हम लोग देख लिए, उसको करते हैं. इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, ये आना चाहिए. So okay, rather than y, take it log y. So this is log of x square minus 5x plus 8 and plus log x cube plus 7x plus 9. Now on differentiation it is 1 by y divided by dx. और ये log है तो ये हो गया. And then ddx of denominator, that is 2x minus 5. I am doing directly. 1 by x cube plus 7x plus 9, and then ddx of this one is what? 3x square plus 7. Okay. So what is dy by dx? Dy by dx is y and then 2x minus 5, x square minus 5x plus 8, 3x square plus 7, x cube plus 7x plus 9. Now if you multiply y means this. So what you are going to get? This is cancelled in the first part. X cube plus 7x plus 9 into 2x minus 5. First में देखे होगे plus 3x square plus 7 into ये cancel x square minus 5x plus 8. So you will get the same thing as you have obtained in the first part, and expanding it you will get this one. So in all the three cases you can verify that भाई function एक ही है तो differentiation तो एक ही, आंसर तो एक ही होना चाहिए ना. So this one is the question number 17. One more question I am going to take. It is fx is equal to 1 plus x square into 1 plus x to the power 4 into 1 plus x to the power 8, and hence find the derivative of the function at x is equal to 1, f dash 1. Okay, चलिए कोई बात नहीं, इसको भी करते हैं. This is the question. fx is equal to 1 plus x into 1 plus x square plus 1 plus x to the power 4 plus 1 plus x to the power 8. Question number 16. You have to find the derivative and then find f dash, the value of derivative at x is equal to 1. Okay. So take log of fx is log लगाया. Product rule से log of 1 plus x plus log of 1 plus x square plus
log of 1 plus x to the power 4 and plus log of 1 plus x to the power 8. Okay. Now differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. Log of fx is nothing but 1 by fx, and then ddx of fx is, I'm going to tell you what is ddx of fx. What is the ddx of log x? It is 1 plus x. What is ddx of 1 plus x square? It is 1 plus x square, and then ddx of 1 plus x square is 2x. 1 plus x to the power 4 and 4x cube. Okay? Plus 1 by 1 plus x to the power 8, and then ddx of 1 plus x to the power 8, 1 ka 0, x to the power 8 ka 8x 7. Is it? So here we have ddx of f dash x is f dash x. fx को आप उधर ले जाओ. fx 1 by 1 plus x, 2x by 1 plus x square, 4x cube by 1 plus x 4, and 8x 7 by 1 plus x 8. You can simply write down next step, fx is equal to this one. Okay. Now what is, मतलब क्या लिखना है? What is the derivative of the function? f dash x is 1 plus x plus 1 plus x square plus 1 into 1 plus x 4 into 1 plus x to the power 8 into 1 by 1 plus x plus 2x by 1 plus x square plus 4x cube by 1 plus x to the power 4 plus 8x 7 by 1 plus x to the power 8. Now next f dash 1. Now tell me f1. हमने यहाँ पर अभी f1 लिखा है. ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 2. Am I right? Everywhere 2. 1 रखेंगे x की जगह तो 2 ही हो जाना है. और f1 क्या होगा? 1 plus 1 2, 1 plus 1 2, 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16. So here we have 16. This is 1 by 2 plus 1 plus 2 plus 4. So 7. 15. 16. $120, I think. It should be 120. 15 by 2, 7.5. It is 7.5. 15 by 2 into 16. Cut ke 15. 120 is the answer. The f dash 1 is 120. Okay. So this is the 16th question, number 16th of exercise 5.5. Now in the last one, what is the derivative of प्रोडक्ट ऑफ 3 डिफरेंट फंक्शन u इंटू वी इंटू डब्ल्यू. और इसको आपको प्रोडक्ट रूल और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन दोनों से करना है. एंड दिस इज फॉर यू. इफ यू कैन नॉट डू, आस्क मी, आई विल गिव यू सम solution. As I said, I will give some snapshots of पैरामीट्रिक फंक्शन, डेरिवेशंस ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन. पैरामीट्रिक फॉर्म का जो है डेरिवेटिव, उसको भी हम लोग कर लेंगे. क्या है? जैसे कोई फंक्शन, हम डायरेक्टली आई एम गोइंग टू डू दैट डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन. सपोज ए फंक्शन x and y both are, x is a function of t and y is also a function of t, and you are required to find dy by dx. So dy by dx is nothing but it is dy by dt and dx by dt. Don't think it is a quotient कि dt dt कैंसिल हो गया, dy by dx है. ये एक रूल हुआ. तो क्या करना है, हम यहाँ पर dy by dt निकाल सकते हैं. हम यहाँ से dx by dt निकाल सकते हैं. जो निकल जाएगा उसको इसमें रख देंगे. तो दिस इज द फंडामेंटल रूल ऑफ द पैरामीट्रिक फंक्शन. जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया कि x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू a sin थीटा, फाइंड dy by dx. Here x and y both are the function of theta. Both are the function of theta.
So in order to find dy by dx, we are required to find dy by d theta as y is the function of theta divided by dx by d theta as x is also a function of theta. So from here, what is dx by d theta? Dx by d theta, a theta cos theta sin theta. So dx by d theta is minus a sin theta. What is dy by d theta? A is constant, so a is out. What is d theta cos sin theta? It is cos theta. So the answer is dy by d theta, dy by d theta, a cos theta by minus a sin theta. So it is minus cot theta. It is minus cot theta. Understand? I think you will. अब इसी में आपसे अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पूछ दिया, डबल डिफ्रेंशिएशन की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। हमने निकाल लिया डी एक्स बाई डी थीटा भी निकाला, डी वाई बाई डी थीटा भी निकाला और डी वाई बाई डी एक्स भी निकाला। अब इसी में आपसे पूछा डबल डिफ्रेंशिएशन, मैंने कहा था डबल डिफ्रेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। एक्चुअली ये क्या है? ये डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमारा डी वाई बाई डी एक्स यहाँ क्या है? माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा। देखिए इसमें क्या जरूरत पड़ना है हमें। सो दिस इज डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, डी डी एक्स ऑफ माइनस कॉट थीटा, डी डी एक्स ऑफ माइनस कॉट थीटा। ओके, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, लेकिन फंक्शन है थीटा में, कोई बात नहीं, हम थीटा को थोड़ी देर के लिए एक्स समझ लेते हैं। तो व्हाट इज द डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स? चूंकि माइनस है तो माइनस तो रहने दीजिए बाहर। कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सो कॉसेक स्क्वायर थीटा, एंड थीटा इज अदर देन एक्स, सो राइट डाउन डी थीटा बाई डी एक्स, जिसके रिस्पेक्ट में करना था वो। सो क्या हो गया ये? कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा बाई डी एक्स। दैट मीन्स जो यहाँ डी एक्स बाई डी थीटा है उसका रेसिप्रोकल आप लिख दो यहाँ पर, माइनस वन बाई ए साइन थीटा, माइनस वन बाई ए साइन थीटा। सो व्हाट इज डबल डिफ्रेंशिएशन? इट इज नथिंग बट माइनस वन बाई ए कॉसेक स्क्वायर थीटा। दिस इज डी। अब इसमें क्या करते हैं, इसी को लोग सीधे एक्सपेर कर देंगे, मतलब दो बार निकाल दिया, इसको भी डिफ्रेंशिएट कर दिया एक बार और, इसको भी कर दिया, मतलब एक बार और कर दिया, डी स्क्वायर एक्स बाई डी थीटा स्क्वायर, फिर इसको कर दिया, तो वो नहीं होता आंसर, है ना। हमें फाइनल डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन निकालना है, तो उसको करेंगे, बाकी को नहीं करेंगे। क्लियर? फिर एक और क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.6 का है ये। x is cos theta minus cos 2 theta, y is sin theta minus sin 2 theta. You are required to find dy by dx. Okay, so just find dx by d theta. Tell me what is the d theta of cos theta? Minus sin theta. Cos 2 theta का माइनस तो है ही, माइनस sin 2 theta, अगेन 2 theta, चेन रूल, 2 theta का डिफ्रेंशिएशन 2. Okay. So minus of minus sin theta plus 2 sin 2 theta dx by d theta. What is dy by d theta? चलिए इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा एलेबोरेट किया है। अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन आया तो ऐसे बनाने से थोड़ा नंबर कट सकता है, 2 नंबर में ठीक है। हो गया। साइन थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा, दिस इज नथिंग बट कॉस 2 थीटा, बट अगेन यूजिंग चेन रूल, दिस वन। सो कॉस थीटा, 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज 2 कॉस 2 थीटा. So this is dy by d theta. So therefore what is dy by dx? It is dy by d theta dx by d theta, यानी cos theta minus 2 cos 2 theta by माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा. अब इसको आगे पीछे आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है.
So this is question number, इसमें था question number 5. Okay, today's last question, that is question number 6. X is a into theta minus sin theta, y is a into 1 plus cos theta. We are required to find dy by dx. Okay, so first dx by d theta, directly a d theta 1 sin theta का cos theta. What is dy by d theta? a 1 का 0 cos theta का minus sin theta, so here minus a sin theta. So therefore dy by dx is nothing but dy by d theta dx by d theta. dy by d theta minus a sin theta, a 1 minus cos theta. Now here use of the trigonometric identities. A or a cancel, minus sin theta can be written as 2 sin theta by 2 cos theta by 2, and 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2. From here one sin is cancelled, so it is minus cot theta by 2. आप यहाँ छोड़ दोगे थोड़ा आंसर कम हो जाएगा, यहाँ पर आ गए आपका आंसर थोड़ा बढ़ गया. इज इट और नॉट? डबल डिफ्रेंशिएशन अगर करना हो तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे. इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? कॉट थीटा का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 का 1/2 एंड थीटा का डी थीटा बाई डी एक्स, मतलब डी एक्स बाई डी होगा ना, डी थीटा बाई डी एक्स, और ये डी एक्स बाई डी थीटा ये है तो इसका 1/a इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. वहाँ से आप 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लेके उसको कॉसेक में डाल दीजिए, यू विल गेट द आंसर. सो दिस इज व्हाट इन दिस लेसन, एंड next day I will conclude this very exercise 5.6. इसमें question number 7, question number 11, these are the some good question, so I will do for it for you all, and also discuss the second order derivative. Partly I have discussed here, but here we have to take some example from exercise 5.7, and after that we have to start mean value theorem, Lagrange's के नाम से जाना जाता है LMB theory, and before that Raoult's theorem on functions, continuity, differentiability. So it's physical interpretation, geometrical interpretation, all these things. Actually these things are in application of derivative, but nowadays it becomes the first part of the differentiation and continuity and differentiability. And then we have the miscellaneous exercise on this very chapter. What you have learned in continuity and differentiability you will get in the miscellaneous exercise. And then the last part of the this volume, application of derivative. In this application of derivative we have to study many more things, many more subtopical concepts. So okay, thank you, have a nice day.